So in the previous slide, we discussed the types of work done. अब हम discuss करेंगे the types of fields. So fields are basically of two types, conservative fields and non-conservative fields. So what is conservative field? एक ऐसी field जिसमें दो properties hold करती हैं. The first property is that the work done is independent of the path followed, and the second property is that the work done in a closed path is zero. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दैट डजंट मैटर कि हम कौन से रास्ते से जाते हैं, either straight path, curved path or any path, the work done is same. Second thing is that अगर हम एक क्लोज पाथ में ट्रेवल करते हैं यानी इनिशियल पॉइंट से निकल के वापस इनिशियल पे आते हैं तो वर्क डन इज जीरो. Examples of conservative fields are gravitational field, magnetic field, electrostatic field, and elastic spring force. Then we have the non-conservative forces. इसके अंदर हम exactly opposite कर लेते हैं यानी इसमें दो properties hold नहीं करती. इसके examples हैं frictional force, air resistance, tension in a string, normal force, propulsion force of a motor, and propulsion force of a rocket. यानी इन तमाम forces के अंदर work done is not independent of the path followed. It certainly depends upon which path is followed. Now the work done by gravitational field. Gravitational field के अंदर हम दो analogies use करते हैं. First is that if the body is moving along the field, the work done by the field is positive, and if motion is against the field, so the work done by the field is negative. जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं हम थीटा के कंपैरिजन से, यानी अगर अलोंग द फील्ड कोई बॉडी जा रही है तो फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो गए, एंगल जीरो से वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा, यानी अगर आप फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों ऑपोजिट हैं तो उसके अंदर जो वर्क डन है दैट इज एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज और उसके अंदर जो वर्क है दैट इज नेगेटिव. Then we say that gravitational field is a conservative field. So the work done is independent of the path followed. यानी अगर आप gravitational field को consider करते हुए work को देखते हैं तो if the initial and final points are same, so the work done is independent of upon which path is being followed. And the work done in a closed path is zero. यानी अगर initial final point same है तो work done zero as we've talked earlier. The work done along either the green line or blue line, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, E equals to the mgh. Now seeing a problem, which of the following is an example of conservative field? Gravitational field, electromagnetic field, both above, या none of these? So correct answer is option C, both above, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं. Another problem is that two boys leave the school on their bicycles for playground. The first boy takes a newly built smooth path while the second boy takes a rough old road. Which boy does more work? First boy, second boy both do the same work and cannot be predicted. Correct option is option B, second boy. अब solution हम देखते हैं इस problem का. We say that friction is a non-conservative force. यानी पहले हम slides में देख चुके हैं कि non-conservative की सबसे पहले example it was friction. यानी friction depends upon which path is being followed, क्योंकि जितनी ज़्यादा friction वाला path होगा उतना ज़्यादा हम work done करेंगे. So the second boy who takes the rough old road, उसने ज़्यादा friction को encounter किया है और उसे work ज़्यादा करना पड़ा है, so he does more work as compared to the first boy. So this was all about this slide. अगली slide में हम power को देखेंगे. Thank you.